Good morning, everybody. So now today we are going to discuss and continue the peak performance and productivity techniques. So the next point is priority scoring. According to the priority principle, 20% effort give 80% result. So we have to focus on that 20% effort, so that we can get 80% of the result, and 80% effort give 20% result. So 80-20 rule is applied everywhere. You should rate or score your priorities. You have to rate or score your priorities, because priority scoring help you to prioritize your task. According to the priority, so now we will discuss on the next important golden statement. You can say the worst use of time is doing something very well that did not need to be done at all. Now the next topic is GTD technique. In this technique, we can accomplish things in 5 steps or 5 P's, you can say. The problem, project, process, people, and performance. So P for problem, identify the problem. And next one is project. Please keep noting. And next one is project. Make a project to solve the problem. Then process. Make a process to complete that project or solve that problem. And the fourth is people. Assign different tasks involved in the process to different people to complete that project on time. And the performance, review the performance of your project. And the next one is review the performance of your project. The real world does not reward perfectionists. It rewards people who get the things done. So planning is prevention. Planning helps in predicting the outcome and allows you to prepare for unforeseen hurdles. Failing to plan means planning to fail. The golden statement is failing to plan is planning to fail. So now the biological prime time technique. You should track the time when your body gives the best performance. This time is called biological prime time. आपने प्राइम न्यूज सुना होगा, आपने प्राइम टाइम का न्यूज सुना होगा. सबसे अच्छी खबर या सबसे फेमस जो भी कंटेंट आता है वो प्राइम टाइम में आता है. सो यू शुड ऑल्सो हैव द बायोलॉजिकल प्राइम टेक्निक. So the biological prime time should be used by you very carefully. This will help you to know your productive hours. You should do high utility tasks in your biological prime time. So now next technique is we should avoid the multitasking and distractions. We should focus deeply on a single subject or single matter. That is the most important technique. So now we will move further ahead. You might have heard the Pomodoro or the Pomeran technique. Pomodoro versus Pomeran technique. In the Pomodoro technique, you work for 30 minutes and take a break for 3 minutes. In Pomodoro technique, you work for 30 minutes and take a break for 3 minutes. In Pomeran technique, you work for 3 minutes and take a break of 30 minutes. Pomodoro technique maximize your productivity. You should not follow Pomeran techniques, है ना. So 30 मिनट काम करके 3 मिनट का ब्रेक. This can be done. So we can say there is a place for everything and everything must be in its place. हर चीज का कोई जगह होना चाहिए और वो चीज उसी जगह पे होना चाहिए. Themed day method. The next technique is themed day technique. You should assign a theme to each day and you should dedicate that day to that theme. For example, you can do a management related task on Monday and have an HR meeting on Tuesday. आपको मैनेजमेंट रिलेटेड टास्क को मंडे को करना है और HR मीटिंग ट्यूसडे को करना है. सो थीम डे टेक्निक. नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज कापा. Chunking around purposeful action.
kappa, chunking around purposeful action. Under this strategy, you chunk or group multiple tasks related to a particular purpose or start working on them. और वो पर्पस आपको मोटिवेट करेगा टू accomplish that task. So this method is called kappa technique. Now the most important thing is day planning. You should divide a day into two sheets. You should divide the day into two sheets. 8 a.m. commitment sheet, 8 a.m. commitment sheet and 8 p.m. achievement sheet. ये क्या होता है? सुबह उठ के हमें कमिटमेंट लेना है कि what we have to do. Suppose that we have to call the people, we have to get the order, we have to get the things done, or we have to have this much of collection, this much of target, this much of order booking. So these are things. 8 a.m. commitment, we should commit something, and 8 p.m. achievement, or शाम में what we had taken the commitment and what we have achieved. So this technique is very powerful technique. 8 a.m. commitment and 8 p.m. achievement. Now delegation. Delegation helps a leader to lead rather than just to perform the task. But some people do not delegate the things because they are having some fear. Delegation बहुत अच्छी बात है, because if you can delegate the task, then you will be free and you can able to concentrate on some other task. So delegation is very important. Now people don't use to delegate because they have some of the syndrome, you can say that, control freak syndrome, I am too busy syndrome, they are too busy syndrome, they even can't pick a call. फर्स्ट टाइम मैनेजर सिंड्रोम, वो अभी मैनेजर बने हैं तो फर्स्ट टाइम मैनेजर सिंड्रोम. इनसिक्योरिटी सिंड्रोम, वो डर जाते हैं कहीं हमारा ये पोजीशन तो नहीं ले लेगा. इनसिक्योरिटी सिंड्रोम. रिजेक्शन सिंड्रोम, कुछ लोग ये भी डर जाते हैं कहीं हमें रिजेक्शन तो नहीं मिलेगा, आई विल नॉट बी गेट रिजेक्टेड. लैक ऑफ ट्रस्ट सिंड्रोम. सो दिस काइंड ऑफ फियर्स आर गेटिंग नॉट अलाउइंग द पीपल टू डेलीगेट द टास्क. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम टू बिजी, मैं बहुत बिजी हूं, हमें मरने का भी फुर्सत नहीं है, इवन आई कैन नॉट डाई. सो दिस इज कॉल्ड टू बिजी सिंड्रोम. द सेकेंड इज इनसिक्योरिटी सिंड्रोम, वो डर जाते हैं कहीं हमारा पोजीशन तो नहीं छीन लेगा ये. फर्स्ट टाइम मैनेजर सिंड्रोम, पहली बार कोई मैनेजर अपॉइंट होके आया है तो दे आर हैविंग लिटिल बिट ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग्स. इनसिक्योरिटी सिंड्रोम, रिजेक्शन सिंड्रोम, ट्रस्ट भी नहीं होता कि ये कर पाएगा नहीं कर पाएगा, गलत कर देगा. सो दिस काइंड ऑफ सिंड्रोम, सो पीपल यूज टू नॉट एबल टू डेलीगेट द थिंग्स. But I can suggest you the 5 ways of delegating a task. I can suggest you the 5 ways of delegating a task. The first is you have to hire the right people. आपको सही लोग हायर करने हैं. You have to hire the right people. Now co-create the direction jointly. अब उसके साथ मिलके आप डायरेक्टली जो है ना वो डायरेक्शन को आप jointly co-create करो. Then the third you can say let him take the daily day-to-day decision. उसको आप छोड़ दो डे टू डे डिसीजन लेने के लिए. एंड गिव देम द अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड देयर विंग्स. उसको अपने पंख फैलाने का अपॉर्चुनिटी दो. यू हैव टू गिव देम अपॉर्चुनिटी टू स्प्रेड द थिंग्स, टू स्प्रेड देयर विंग्स, सॉरी. एंड द लास्ट वन इज गिव अ गुड कंपनसेशन. उसको रियलाइज भी होना चाहिए कि उसको कंपनसेशन अच्छा मिल रहा है. सो these are the 5 things you should keep in mind to delegate, है ना. When you delegate the task, you will create the followers. But when you delegate authority, you will create the leaders. तो followers और leaders बनाने में difference है. अगर आप task को delegate कर रहे हैं, then you are creating the followers. But whenever you are delegating the authority, then you are creating the leaders. ये difference होता है छोटा सा. Delegator is responsible, not delegatee. Delegator is responsible, not delegatee. People who delegate the task should take the responsibility for task accomplishment. जो people delegate करता है ना task को, he should be taking the responsibility of that task. You should delegate a task to most appropriate person for that task. The person must have knowledge, skills, interest related to that task. ऐसे लोगों को delegate करना चाहिए हमें.
So now the next point is circumstantial level of delegation. Situational leadership इसे हम बोलते हैं. You should delegate according to the situation. You should decide how much delegation and control are required for particular task or delegation. आपको वो चीज़ देखना है कि कितना हमें उस पर कंट्रोल रखना है, कितना हमें फोकस करना है, कितना डेलीगेट करना है. So that should be in your control. The next point is job shadowing. That is called I do you see. Job shadowing, that means I do you see. In this model, लीडर जो है जूनियर को अपने साथ ले जाता है और वो करता है और जूनियर देखता है. आफ्टर द जूनियर गेट लर्न, दिस इज कॉल्ड आई डू यू सी. उसके बाद होता है यू डू आई विल सी. आप करो मैं देखूंगा. एंड आफ्टर दैट उसके बाद होता है कि आप करो और फिर रिपोर्ट करो इमीडिएटली. और धीरे धीरे जब वो सीख जाता है देन उसको वीकली या मंथली उसको करने दो एंड देन लेट हिम रिपोर्ट ऑन वीकली बेसिस और मंथली बेसिस हाउ एज पर द वर्क you can say that. Now next point is criticality and capability matrix. Criticality and capability, कौन सा काम ज़्यादा critical है और कौन capable है. You should delegate the most critical task to the most capable person. You should delegate the most critical task to the most capable person. Similarly, you should not delegate less critical task to more capable person. So criticality and capability, you should have the proper understanding of that matrix. Delegation, that is called outsourcing. You can outsource delegation to get an advantage. Like I can have an example. Pepsi outsource its manufacturing and distribution to Varun Beverage in India. Pepsi जो है वो मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को वरुण बेवरेज को आउटसोर्स किया हुआ है. सो पेप्सी ओनली फोकस ऑन सेल्स एंड मार्केटिंग. पेप्सी सिर्फ सेल्स और मार्केटिंग पे फोकस करता है, बाकी मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने दूसरे से कर लिया है. इन दिस वे सो मेनी कंपनी, इवन सीमेंस भी जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग को आउटसोर्स कर लिया है. सो इन दिस वे सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स द थिंग्स एंड दे आर हैंडलिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क. So now the last one is management by absence. Management by absence, MBA. Ideal MBA technique to manage your company without your presence. ऐसा होना चाहिए कि आपके बिना प्रेजेंस का कंपनी चलनी चाहिए. This is called management by your absence. Ideal MBA, ideal MBA. I for integration, D for delegation, E for elimination, A for automation, and L for liberation. Integration, that means integrate similar departments. Integrate similar departments. D for delegation, delegate the task to some other employees. E for elimination, eliminate the unimportant task. A for automation, use the technology to automate the process. Processes को automate आपको कर देना है, so that the time can be saved, and also there should be the people will find easy. People should find easy to just do that work. And L for liberation, outsource the task. Outsource the task. So the important thing which you have to keep in mind, the golden statement. What is your goal? What is the problem? What is the goal? What is the problem? आपका गोल क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है. आपका गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है. गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है. गोल क्या है, प्रॉब्लम क्या है. व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन अचीविंग दैट गोल. सो यू हैव टू ऑलवेज रिपीट दैट, यू विल गेट द आंसर. थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे.